हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट आपको 100 क्वेश्चंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग उप भी बोलते हैं। तो अगर आप बिहार स्टेट एग्ज़ाम और TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हो कंप्यूटर साइंस से, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पर नए हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर भी कर लें और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखा करें, ताकि आप लोगों को उप में जितने क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट बनते हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फीचर ऑफ उप। मतलब बोल रहा है इसमें से कौन सा जो फीचर है जो उप का नहीं है। तो इसके ऑप्शन आपका डी है, कंपाइलेशन। यानी उप के अगर फीचर की बात करें तो इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, लेकिन कंपाइलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज़ द प्योरेस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसमें से बोल रहा है इसमें से कौन सा जो लैंग्वेज है प्योर आपका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि आपका सी है, यानी स्मॉल टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैपिंग अप डाटा एंड मेथड्स टुगेदर इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनहेरिटेंस प्रमोट्स। तो इसके ऑप्शन भी है कोड रीयूजेबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोइंग ओनली इसेंशियल फीचर्स एंड हाइडिंग डिटेल्स इज। इसको ऑप्शन ए बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं ऐसा कर रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को टाइम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग कर सको। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एबिलिटी ऑफ ए मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म इज। इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। विच इज़ नॉट एन उप लैंग्वेज। इसको बोलते हैं सी जो कि आपका उप लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जावा है, C++ है, पाइथन है। द कंसेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन। इसको भी है आपका सिमुला। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ, क्या है ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ, ऑप्शन ए है आपका क्लास। इन C++ द कीवर्ड यूज टू डिफाइन ए क्लास इज क्लास। ए क्लास दैट कैनॉट बी इंस्टेंट इज। इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ए कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। एक द कंस्ट्रक्टर हैविंग नो आर्गुमेंट इज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग ए न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। विच ऑपरेटर इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा, न्यू। डिस्ट्रक्टर is used to delete object. In Java, destructor is replaced by finalize. Which type of inheritance is not supported in Java? Multiple. The concept of binding data and code is encapsulation. Which member cannot be accessed outside the class? Private. Function overloading is an example of compile time polymorphism. Function overriding is an example of runtime polymorphism. Which keyword is used to inherit in C++? इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। Which keyword is used to inherit in Java? Derived. Interface in Java is used for all. Which operator cannot be overloaded in C++? तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इन उप बेस क्लास इज ऑल्सो नोन एज पेरेंट क्लास। इनहेरिटेंस इज यूज्ड फॉर कोड रीयूजेबिलिटी। प्राइवेट मेंबर ऑफ बेस क्लास कैन बी एक्सेस्ड बाय फ्रेंड क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट मेथड। which keywords prevents inheritance? Final. Which function is automatically called when object goes out of destructor? Composition represents has a relationship. Virtual function in C++ support
Option D. In Java, all classes are subclasses of object. Constructor name must be same as class name. A copy constructor is used to, इसके ऑप्शन ए करेक्ट है. इनकैप्सुलेशन हेल्प्स इन, ऑप्शन सी बोथ एंड भी, मतलब मॉड्यूलरिटी एंड सिक्योरिटी. पॉलीमॉर्फिज्म इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग वर्चुअल फंक्शन. विच फंक्शन इज नॉट इनहेरिटेड इन जावा, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर. विच डाटा इज एब्स्ट्रक्शन, तो ऑप्शन है हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स. विच एसेज मॉडिफायर अलाउज एसेज फ्रॉम एवरीवेयर, पब्लिक. In C++, dynamic memory allocation is done using new. Which keyword is used to return object reference itself, this. Which of these features is not supported by C, classes. In Java, multiple inheritance is achieved using interface. What is the default SS modifier for a class in Java? Option D, package private. Which keyword is used to define an interface in Java? C, interface. Which of these cannot be static in Java? Constructor. Which operators is used to access members of an object C++? D number. What is the size of an empty class in C++? 1 byte. Which operator is used to define the scope of member in C++? Option A. Which of the following supports operator overloading? C++. Function declared inside a class is by default inline function. Which of the following is not type of inheritance? B number. When two or more classes derived from a single base class, it is called hierarchical inheritance. Overriding occurs in, option B, derived class. Which of the following is not a valid SS modifier in C++? Internal. Which of these keywords is used to prevent method in overriding? Final. Which class member can be asset private data of a class? Friend function. Which keyword is used to define constant member in C++? Const. When an object is passed by a value, copy constructor is called. Which operator is used for member access through a pointer? B number. A static member function can be access only static data. Which keyword defines a constant object? B number. Which concept helps to achieve dynamic dispatch? Virtual function. What is a friend class? तो ऑप्शन ए, class that access private members of another class. Which of these is not a constructor type? C, dynamic. Which constructor is used to create a copy of another object? Option A correct है. The concept of reusing code is achieved through inheritance. Which SS specifier allows visibility within the same package? Default. Which of these following is an example of dynamic binding? Overriding. Which member function is automatically called when object is created? इसको है आपका constructor. When is constructor called? After object creation. Which operator is overloaded for output in C++? Option A. Which operator is overloaded for input in C++? B. What is the advantage of OOP? Option D. What is the full form of OOP? तो ऑप्शन ए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. Which is not an advantage of OOP? Option C, complexity. Which of the following statement is true about classes? तो ऑप्शन बी, classes define the structure of objects. The process of hiding implementation details is called abstraction. The concept of one interface multiple function is polymorphism. The OOP feature makes it is easy to add new features on existence, जिसको भी बोलते हैं. The keyword is used to define a constant variable in Java, तो ऑप्शन ए है. Which of these cannot be virtual in C++? Constructor. Which function is evoked automatically when object goes out of a scope?
destructor. Which of these is not a visibility mode in inheritance? Virtual. Which of these features makes OOP different from procedural? तो option B, data hiding. A structure in C++ differs from a class because its members are public by default. Which of these is an abstract data type? Class. Which member function is used to destroy objects explicitly? Delete. Which concept allows same function in a class? Overloading. The mechanism of calling a function at runtime is called dynamic binding. Which keyword in C++ makes a function belong to the class rather than object? Static. Data members of an object are accessed using D. The main advantage of data hiding is D. Polymorphism can be achieved through D number. Abstract class can have B number, both abstract and concrete method. Which keyword is used to call the base class constructed in Java? तो ऑप्शन ए सुपर. The language where everything is an object, तो ऑप्शन ए स्मॉल टॉक. तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उप के, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इस वीडियो को आप लोग को एक दो बार देखने के बाद सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कंप्लीट हो जाएंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें. ऑल दी वेरी बेस्ट. थैंक यू.